आपने हमारा वेबसाइट वगैरह देखा होगा टू नो अबाउट द प्रोग्राम। हाय, आज हमारे स्टूडियो में है रितिका खुराना जी। रितिका मैम, वेलकम टू स्टूडियो। हाय, थैंक यू। मैम, यू आर एन एजुकेशनिस्ट ना, राइट? अब मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या रोल होता है एजुकेशनिस्ट का। आजकल मैंने एक आपने एक जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने स्टेम एजुकेशन बताया। What is STEM education and what exactly educationists do? So I think as an educationist, our role is to work on how education should evolve. Okay. We are in an evolving time where employability is changing, the nature of jobs is changing, Okay. and how so similarly our education system also needs to change and evolve. Okay. So as an educationist, I think our job is to be able to be ahead of this trend, because the children who are studying now will probably be employable in 15 to 20 years. So how do we train them for a future that we don't know about? So that is the job of an educationist. So when we talk about STEAM education or STEM education, so that is when disciplines are integrated. For example, so for STEM it is science, technology, engineering and mathematics. Okay. And STEAM adds art as well to it: science, technology, engineering, arts and mathematics. Okay. So all these disciplines are put together to come up with unique designs or to come up with a project or to solve a problem. Okay. मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आप विंड मिल की अगर हम बात करें तो विंड मिल्स हैव बीन देयर फॉर a very long time now, right? Almost for the last 50-60 years, and even before that, even in historic times, we used to have windmills and they were used for different jobs. Right. But windmill design आज भी हो रहा है, and we are coming up with new and innovative designs जिसमें हम कम स्पीड में भी विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएं। Okay. हम इस तरह के विंडमिल डिजाइंस इनकॉर्पोरेट करें which are more which do not have a space constraint. They can be easily deployed in residential areas, they can be deployed on top of buildings, they can be deployed in IT parks. So we are still coming up with new and innovative designs and solutions for something which probably हम already बहुत साल पहले डिजाइन कर चुके हैं। Okay. So when you do that, you need to understand science, you need to understand the topography of an area. वहाँ wind speed कैसी है, वहाँ की पूरी geography, how the weather impacts that region. Okay. Then what are the locally sustainable and sourceable materials with which you can design it. And then the design should aesthetically also appeal, right? It has to look nice when you put it in a residential complex or when you put in an IT park. So all these come together, only then you can make or design a solution which can go ahead, or which is, we'll say, economically and even nature wise it's viable. So that is what is STEM and STEAM education. Okay. So that's how education is delivered when we do a program like STEM or STEAM integrated program. When it was started, ma'am? When this STEM education started? So STEM has been there for a very long time. Okay. So for us, our company, The Workshop, we recently got our STEM accreditation, where we have an enrichment program that delivers lessons to develop critical thinking skills in children through scientific experiments. Okay. So we use STEM as one of the models. So we try, when we do our lesson planning, we try to do interdisciplinary learning, where we integrate all these subjects together to develop a lesson, and we try to give that importance to each subject, so that when the child is learning, he understands what is the practical application of what I am learning. Okay. Yeah. But this okay, great. And as you said, we are on a certain stage where we are evolving, and this education also needs to be evolved, right? Where you see this future of education? कहाँ जा रही है हमारी दुनिया? We are jumped from 3G to 5G, and some of the countries are on 6G, 7G. हम कहाँ जा रहे हैं? क्या इसका फ्यूचर है? कैसे हम इसको मैचअप कर पाएंगे? क्या इंडियंस हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी भी हैं इस वक्त?
I think one very good thing about developing countries like India is that people are very versatile. You know, हम बहुत we are very hardworking. We are very adaptable. You know, so we adapt to new conditions much faster and much sooner. And then there is a hunger for, we want to prove ourselves. We want to work hard. So we know as a country, we know that there is no shortcut to hard work. Okay. So that is something that always stays. You know, no matter in which era you are, there is never going to be a shortcut to hard work. Okay. So that is one thing which I believe that we inherently have. Yes. So, that is something that works in our favor. And then even if you look at the workforce, the number of people, the young generation that we have, it is developing countries like India which are going to supply the workforce to the entire world. Developed countries, they're already struggling with, first, they don't have the younger people, then even because of their early retirement options. So the entire work is going to come to countries like India. Okay. But as said, along with that, we also need to look at the way we are educating our future generations. Yes. जैसे अगर हम 90s की बात करें और even before that, after independence, we were just, it was like we were just making ends meet. So, most of the jobs were either government controlled or through, family run businesses, so which was quite bureaucratic. Then in 90s, early 90s, when our economy opened up and we had a lot of foreign investment coming in, multinationals coming in, so that was the age of internet, when internet came in. So now the kind of jobs that were there suddenly changed. And then our education system also changed. We needed to produce, or our young people needed to be fast. Like kind of human calculators, how fast you can calculate, how quickly can you fit into a system, how quickly you can be a part of that computing man force, that was needed. Yes, that was needed at that time. But right now, what are we looking at? We are looking at AI. We are looking at robotics. We are looking at augmented reality. So when these children or they are going to compete with this future, we need to focus on other skills. We need to focus on how creative they are. We need to focus on how unique solutions they can design. Okay. And we also need to see how they can be more resourceful. So coming up with new solutions, but with sustainable materials, with less resources. So that is what is needed in future. So हमारी जो अभी की generations हैं, हमें ये चाहिए कि हम उनको problem solvers बनाएं, हम उन्हें collaborate करना सिखाएं, हम उन्हें resourceful होना सिखाएं, हम उन्हें creative problem solvers बनाएं, उनके अंदर critical thinking skills develop करें. That's what is needed. मैम, क्या AI का क्या future है? आपको क्या लग रहा है कि कैसी दुनिया हो जाएगी? जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं जस्ट हम पुराना कुछ टाइम उठाता हूँ मैं, तो कहते हैं कि 18 समथिंग में जो ओवरऑल वर्ल्ड का पॉपुलेशन 100 करोड़ था, आज कुछ 100 साल में 200 साल में सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन ही 17% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, इट विल कम अराउंड 135 करोड़ का इंडिया का पॉपुलेशन हो गया. एआई का काफी चेंजेस हुई हैं. हम घोड़े से गाड़ियों पर आ गए, फाइलों से कंप्यूटर्स पर आ गए, रेडियो से नेट तक आ गए. पहले टीवी चला, केबल चला, नेट एज आया, वेब सीरीज एक अलग मूविंग सेक्टर है, एक हमारा मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया इज अनदर काइंड. एआई का क्या फ्यूचर है? हम क्या देख रहे हो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज? So, artificial intelligence, as per me, is, so we have so much data, right? I mean, with us connected to internet, we are connected to internet like
all the time, like 24 hours we are connected to internet. That's right. A lot of the times, like on social media, we are even putting our basic information, like where are we going, what are we eating, the financial transactions that we are doing. Everything is happening over the internet. Yes. So there is, for each and every person, there's this huge amount of data that is available, right? Like, if anybody runs the checks on me, that person can even know what is the food that I like, what is the kind of restaurants I like to eat, what are the holiday destinations I prefer, how do I like to, where do I spend my money, So Right. all that data about every individual is available Right. on the internet. So when all this data is being put together and there is a robot who's making a judgment or accessing all this information together to generate something, that is giving us artificial intelligence. So as a human, I have one brain and I have a particular set of information that is fed inside my mind, right? Right. So whatever I do or whatever I decide is based on my information or my knowledge. But now with AI coming in, they have access to like the knowledge of everybody. So based on that, the inferences are being drawn. So I think AI has a huge potential. Yep. And it is going to be deployed in almost every field and industry that we are talking about, that we can imagine, but there has to be some protocol. How do we make the use ethical? How do we ethically use AI? So there has to be a very strict guiding body or a governing institute that actually tells us that how or what can be done with AI, or how far can it go, because the line is very thin, between unethical and ethical. Right. आप एक बंदे की पर्सनल स्पेस, उसकी प्राइवेसी को कब ब्रीच कर देते हो, कर दोगे, that is very difficult to say. So as so for the big companies who are promoting this, I think there has to be a lot of focus on this part of how do you make it ethical. Okay. Yeah. That earlier age we had this human rights kind of thing. So आप कह रहे हैं कि यही हमारा AI में भी कहीं पर फिक्स होगा कि Yes. I mean, human would have certain rights where AI would not take over the things. Yeah. Right? Is that so? Yes. मैम काफी स्टडीज ऐसी आ रही हैं जो पहले नहीं थी. एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूँ वो कल गलत हो जाएगा, और वो होना ही है गलत, क्योंकि कुछ नया खोज लिया जाएगा. राइट. इट वाज लाइक कल जो हम स्टडीज करते थे कि अर्थ इज फ्लैट, कुछ नया हमने डिस्कवर किया तो हमारी पूरी स्टडीज ही चेंज हो गई कि अर्थ इज राउंड. अब कुछ प्लैनेट्स हमने डिस्कवर किए तो और स्टडीज चेंज हुई कि ऐसे घूम रहा है और सारा कुछ. तो आप ये आने कुछ हमारी जैसे स्टडीज जैसे क्वांटम फिजिक्स की बात कर लेते हैं. एक न्यू स्टडीज आपका यू वेयर अबाउट दिस क्वांटम फिजिक्स, राइट? तो इसमें ये एक उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे करंट फिजिक्स के फंडामेंटल्स पर हिट करते हैं, राइट? तो वो आने वाले टाइम पर वो कैसे करेगा कि जो हमारा एंटायर फंडामेंटल इज बेस्ड ऑन दिस करंट फिजिक्स थिंग्स. तो जो न्यू स्टडीज आ रही हैं जो फंडामेंटल को आप कह रही हैं चैलेंज करती है, जो फंडामेंट्स को चैलेंज कर रही है, वो उसको कैसे हम ग्रैब करेंगे और कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे हम उसके ऊपर? See, one thing that is constant forever is change. Right. And whatever we think is valid or is true today may not be valid tomorrow. Right. Correct? Because absolute truth kuch nahi hota hai. Everything is relative. Whatever I'll say depends on my knowledge and my perspective. So that is very much valid because
first is our history, our past. Our knowledge of our past is a it's a connection. हमने कुछ excavations और जो भी हमारे पास historical references हैं, हमारे पास कोई if there are any books or any, lots of stories, discoveries, so उन सबको हमने मतलब वो puzzle के pieces हैं जिसको हमने साथ में रखा और हम उनको connect करते जाते हैं और उसको connect करते करते हम अपनी history बना लेते हैं. So suppose I say that like till recent I thought that Tipu Sultan was the first person to use rockets in warfare. He did that in 17th century. Right. But recently some archaeologists have discovered even before China there were some kings who were using rockets. So that's something which was probably valid a year ago and was true is no more true, because there is something else that we have discovered and our history has changed. The reference points have changed. Similarly for our future, as we are learning more about the universe, as we are researching more, there are new discoveries which are happening. So हमारा जो fundamental है उसके साथ हम we cannot stick to it, so we need to be always open for change and always open for questioning. Right. तो वो अगर आप आज क्वेश्चन कर रहे हैं, that is valid, because we cannot assume that this is going to be true. So whatever you see, you have the right to question. So you should question and yeah. I just missed the point. Sorry. I missed the point. Okay, anyhow. Educationist, मैम ऑल्सो राइट, ये सारी रिसर्चेज वगैरह कहाँ हो रही है मैम? ये जो हम कह रहे हैं कि कुछ रिसर्चेज हो रही है, डेटा साइंटिस्ट आते हैं, थिंग्स आर हैपनिंग एंड जहाँ पे कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं एंड डिसाइड कि लेट्स टेक अ वर्ल्ड टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये सारी रिसर्चेज कहाँ पर होती हैं? I think there is not one place. There are various bodies which are working on it. Okay. So there are a lot of private companies also which work and conduct their own independent research. So it is across, I think, but developing countries में थोड़ी कम होती हैं because the amount of money that is being spent on research is very less. So हमारा GDP का बहुत ही छोटा percentage research में जाता है, which we need to increase. We as a country, I think recently there has been a change in the new budget. They have now allocated more money for research. So, but research has to happen everywhere, and I think it is happening both in government institutes and in private institutes. Private companies for finding more, or how do they work on the economics and how do they make a product which is sellable, and government companies are focused on their own security and how do we stay ahead of the other countries. Ma'am, actually I had a discussion with one of my a person who came to me and he said कि बड़ी एक अजीब सी बात मेरे को अक्सर वो स्ट्राइक करती है. ही सेड कि ऑलवेज कि हमारी स्टडीज जो थी वो बहुत प्रेशियस थी और हमारी स्टडीज को हमें ही नहीं पढ़ाया गया और वो हमसे ले गए. इंडिया की वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया, और वो हमारी स्टडीज को ले गए एंड ही वाज हैविंग सर्टेन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस कि मेरे को हमारी स्टडीज जो थी वो बड़ी प्रेशियस थी और वो ले गए. उसी लाइन में उसने नेक्स्ट वर्ड कहा कि वी आर वर्किंग ऑन दिस वासुदेव कुटुंब कंसेप्ट जहाँ पे वी विल ट्रीट वर्ल्ड एज एन फैमिली. राइट. तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आता है कि हम फर्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं कि वो हमसे धोखा कर गया और सेकंड सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि वो हमारी फैमिली है. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस G20 थिंग आल्सो, इट इज आल्सो अबाउट टू कनेक्ट द वर्ल्ड, राइट. तो यहाँ पर आप कैसे सोच रहे हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये वन वर्ल्ड का कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए कैसे हेल्पफुल है और कहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी आएंगे, कोई कहीं पर कुछ हिट भी लगेगा हमें? Actually, if you ask me, I am very orthodox, and when I say orthodox, I believe that the way we led our life, in the olden times, it was the best.
So the way this technology is evolving, I think we are, somewhere we are crossing that line where we are going closer to this Back to disaster. roots. So back to roots is very, very important. Ma'am, again psychology says one thing कि आपको हमेशा पिछला टाइम अच्छा लगेगा. आप कहीं पर भी चले जाओ, आप अगर स्कूल से निकल के बच्चा कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाके कहता है कि वो स्कूल का टाइम के हमारा कितना अच्छा था. कॉलेज से निकल के वो जॉब में जाता है, जॉब में जाके कहता है कि हमारा कॉलेज का टाइम कितना अच्छा था. कॉलेज से निकल के वो एक फैमिली एस्टैब्लिश करता है, उसके बाद उसको वो वाला टाइम याद है कि यार मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालना कि. तो इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि उसको ऑटोमेटिकली पिछला टाइम अच्छा लगता है, वो अपने करंट टाइम को अप्रिशिएट नहीं करता. और एक और साइकोलॉजी में एक और चीज आती है कि जैसे कि आज जो टाइम मेरे लिए बुरा है, लेट्स सपोज कि अगर कोई बुरा टाइम है, इट हर्ट्स मी, एंड आने वाले टाइम पर वो मेरे लिए एक यादगार रह जाएगा और मैं उसको याद करके हंसूंगा. राइट, जो करंट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारी जैसे फ्रेंड्स में आपस में लड़ाई हो गई, राइट, तो वो टाइम बड़ा, उस टाइम तो वो एक एग्रेसिव लड़ाई हुई है, लेकिन एक टाइम के आने के बाद हम हंसते थे कि हम कैसे लड़ पड़े थे उस टाइम. राइट, तो वो एकदम से चेंज टाइम, वो वाला टाइम जो था आने वाले टाइम में उसको वही वाला टाइम वो भूल गया कि उस टाइम जब वो नाराज थे तो वो कैसे थे, लेकिन उसने आने वाले टाइम में याद किया कि यार हम ऐसे लड़ पड़े थे एंड हाँ. राइट, तो ये चीज को साइकोलॉजी वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि पुराना टाइम अच्छा था. इस चीज को यूज काफी प्रोपेगेंडा में भी किया जाता है कि पुराना टाइम अच्छा था. हम आज के टाइम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. आने वाले फ्यूचर को भी अगर देखें तो वो हम कहते हैं कि जहाँ पर हम हैं और जो हम सोच रहे हैं, जो उसके बीच का डिफरेंस है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं. राइट, तो हम फ्यूचरिस्टिक हम हो सकते हैं, काफी दूर तक सोच सकते हैं, और लेकिन जहाँ पर हम करंटली इस वक्त हैं, हमारी एजुकेशन, हम अगर अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक आ गए. हम बैलगाड़ी से आज रॉकेट साइंस पर हैं. तो इस चीज को आप आगे कैसे देख रहे हो इसको कि पिछला टाइम तो बैक टू रूट्स, अभी आपने कहा कि हमें बैक टू रूट्स, और मैंने बहुत लोगों से सुना ये बैक टू रूट्स, और मैं बड़ा सरप्राइज होता था कि ये लोग आने वाला टाइम क्यों नहीं देखना रहते कि क्या हम बैलगाड़ी पे वापस जाना चाहते हैं, या फिर क्या बैलगाड़ी से भी कोई अच्छा पीरियड था हमारे पास. सी, आपने दो बातें कही. एक तो है कि हमारे अपने पर्सनल आवर ओन पर्सनल रिकाउंट्स, लाइक जो मेरी जिंदगी है, जो मैंने अपनी जिंदगी जी है, और उसमें जो हमारे मेमोरी पैटर्न्स हैं, द मेमोरीज दैट वी हैव ऑफ आवर ओल्डन टाइम्स, बिकॉज and I think if you look at it psychologically also, it is actually indicative of this, that how you only remember good things about your past. You do not remember of the bad things, right? The bad memories, because most of the time हम इस अच्छी बातें ही याद रहती हैं. इसीलिए हम हमेशा पास्ट में जाना चाहते हैं कि मेरा बचपन बड़ा अच्छा था या मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था, so that is actually very good if you want to do that. What happens is that present में we are facing problems, and we have to work hard, and there are so many things that we need to address which we do not, हमें उस वक्त की कोई खुशी नजर नहीं आती है. So that I think is answered by that. But when I say we need to go back to the roots, what I mean to say is that somewhere while becoming global, we forgot or we lost the science that we already had, the learnings that we had from our future, from our older generations, the learnings that the way to live life, how to be more sustainable, how to be more content. If you look at let's say our grandmothers, most of the grandmothers were simple stay-at-home moms who actually did not expect anything out of life. They spent their entire life just nurturing their family. सिर्फ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर में जो बड़े रहते हैं, सबका वो ध्यान रखने में कि वो सब ठीक ठाक रहें. इससे वो इतनी जिसे कहते हैं खुशी और कंटेंटमेंट निकाल लेती थी कि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी काटती थी. बट इफ यू लुक एट अस नाउ, मोस्ट ऑफ अस हैव ऑल काइंड ऑफ हेल्प अवेलेबल. वी हैव एक्सेस टू एवरी बेस्ट थिंग, लाइक द बेस्ट गैजेट्स. वी हैव एक्सेस टू go to for good holidays, and if we want to work, we also have the choice to work on our career, or you want to pursue something that you want to do, you're passionate about. But still, most of the people that you will meet
will be discontented. There will be something in their life that they are saying कि नहीं यार, हम मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, या मेरे को लाइफ में ना मुझे किसी चीज़ की कमी है. कोई है जो कहते हैं कि मेरे को कमी नहीं है. बहुत ही कम लोग होते हैं मुझे लगता है आजकल. मैक्सिमम लोग, इफ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ऑल्सो, मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, यू नो, एंड so many other problems are much more on the rise than they were previously, because we were content. अभी मेरे पास अगर 20,000 का मोबाइल है तो मुझे 50 का चाहिए, 50 का है तो और महंगा चाहिए. You know, that's how we are progressing. We always, if I have a smaller house or the kind of car that I have, so it is good for the economy, it is good for the industrialists, but I think it's not good for the planet. Right. As a planet, as a country, you know, from if we could be like, you know, they say that there is enough on planet Earth for everybody. सबके हिस्से के लिए enough है. पर अगर हम सिर्फ अपना हिस्सा लें तो enough है. पर अगर मैं अपने हिस्से की जगह और सब प्राणियों का भी लिए जा रही हूँ तो फिर वो कैसे enough रहेगा? नेचर के वजह से कुछ है. उतने ही resources थे ना. अब उतने resources को हमने we are growing our population. We know how so many species are getting extinct. We know how the entire food web and how entire food chains are related. जब एक एक species extinct होता है तो उसके कितने long term effects हैं which cannot even be आप उनको reverse नहीं कर सकते हो. वो जो changes हो रहे हैं. We are looking at a huge plastic problem. We are looking at such a huge you know, pollution problem that we do not know how to address. Like if you go to any पर यहाँ पे ना मैं सोचता इन चीज़ों को भी कि प्लास्टिक पोल्यूशन एंड दिस पोल्यूशन इश्यूज. बट आप देखो कि हमारी कितनी प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉर्ट आउट कर दी है. प्लास्टिक के बगैर वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. आपको अगर आपको डेली रूटीन में आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं किसी अपनी स्टोर से जाकर तो वो प्लास्टिक में पैक्ड है. राइट. दूसरी तरफ अगर हम कहीं पोल्यूशन, तो वी कैन नॉट अफोर्ड. हम फैक्ट्रीज बंद नहीं कर सकते, हम गाड़ियाँ चलानी बंद नहीं कर सकते, हम मतलब जो भी रीजन है पोल्यूशन के वो कहीं ना कहीं पे हमें बेनिफिट भी कर रहे हैं. तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि ये वाला रिक्वायरमेंट इतना है, ये वाला रिक्वायरमेंट इतना, और ये इस चीज का एट लास्ट में कहाँ पे डिसीजन हो रहा है कि नाउ विल गो दिस इन दिस पर्टिकुलर वे. So I think what you've said is completely valid. Technology and the way we have, you know, all this is aiding us in many ways. So what we need to do as individuals is to make a conscious choice. As I said before also कि उतना ही लो जितना आपको चाहिए. You know, for example, जैसे शॉपिंग की आपने बात करी. If I'm going shopping out, I can definitely carry a sustainable bag. मैं क्लॉथ बैग घर से ले जा सकती हूँ, right? That I can ensure कि मैं अपनी, तो वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको आप बंद कर सकते हैं. The government also need to take very strict measures to stop the usage of single use plastics. Yes, industry में जहाँ पे उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, for example, let's say in the medical industry or everywhere else in the technology, if it is being used, then those companies and that industry has to be responsible to you know, उसको manage it and decompose and recycle it accordingly. अभी प्लास्टिक की बात करते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होएगा है ना, कितने टाइम तक ये कहते हैं कि बनी रहेगा. क्या इसका फ्यूचर है इसके बाद की? So we need to be you know, focus a lot on recycling and again reduce the single use wherever possible, जहाँ possible है. And again, for developing countries it's not a big problem. We just need to go like 30 years back when most of our household things, for example, food wrapping हो गया. We used to use muslin cloths or beeswax cloth for food wrapping, right? Now we are using cling film or aluminium foil, which is just a single use thing. So we can always go back to that. Shopping bags हो गया, आपका water bottle का trend हो गया. Instead of buying a plastic water bottle which we just trash away, we can use a reusable water bottle. घर से हम अपनी पानी की बॉटल ले जा सकते हैं. Single use containers हो गए. So these are all practices जो कि आप और मैं हम अपने घर में कर सकते हैं. So you cannot even imagine that if every house in your community starts doing this, तो उसका impact क्या होगा. उसके बाद government has to do that businesses and vendors and shopkeepers, the government has to impose there, because there, you know, somewhere the agenda is profitability or what is easy to do. So easy से हमें sustainable consciousness develop करनी है हर इंसान में कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या मेरे पास इससे बेहतर solution है,
इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि मेरे लिए क्या आसान है और किस में मेरा ज़्यादा पैसा बन रहा है। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। ये वाले टर्म्स में जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हाँ ऐसी वाली फील्स आती हैं हमारे पास कि यार वी शुड टेक केयर ऑफ दिस प्लास्टिक थिंग्स एंड पोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। लेकिन जब हम अपना प्रोग्रेसिव होते हैं, जब हम कहीं पर तो कहीं ना कहीं पर आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। अदरवाइज आपको नहीं लगता कि हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में कंफ्यूज रहता है कि शुड आई डू दिस और शुड आई। तो पीपल ऐसे भी देखे हैं कि दे वोंट केयर, वो अकॉर्डिंगली अपने चलते रहते हैं। डस्टबिन मिलता है वो ठीक है, आजकल डस्टबिन हर जगह पर अवेलेबल हो गए हैं, पहले तो होते भी नहीं थे हमारे पास डस्टबिन। आजकल डस्टबिन क्योंकि पड़े हुए हर 10 कदमों के बाहर तो हम ढूंढ लेते हैं। मैं भी एक बार कुछ फेंकने से पहले 4-5 बार नजर मारता हूँ कि यहाँ पे मेरे को डस्टबिन आसपास कहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर आपको आपकी ग्रोथ रेट को कम नहीं करता या आपकी ग्रोथ रेट को रोक नहीं देता। यहाँ पर जो आपके कॉन्फ्लिक्ट खुद से खुद का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि यार अब मैं कहाँ ढूंढूं। लेट्स सपोज कि छोटा सा पॉइंट लेते हैं, एक हमें कुछ फेंकना है, हमारे पास डस्टबिन नहीं है। अब वो जब तक वो मेरे पास है वो मेरे को इरिटेट करता रहेगा कि ना मेरे को डस्टबिन मिल रहा है और ना मैं इसको अपनी गाड़ी में रखना चाहता हूँ। तो उस केस में आपको लगता नहीं कि बंदा तो कंफ्यूज ही रहता है यार कि अभी क्या जो फोकस कहीं और कर सकता था, जो टाइम था किसी और जगह पे फोकस करने के लिए, वहां पर ही खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। I think it has to be very, very conscious choice. So the path that you are taking for yourself, it has to be very conscious that I am not going to put my waste on others to manage. जो मैंने इस्तेमाल किया है उसको संभालने की, उसको डिकम्पोज करने की या उसको सही जगह कैसे पहुंचाना है वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है. So when you develop that as a conscious choice, the answer will be very clear. मेरे को नहीं रखने का. Yes, I mean like you can carry just एक छोटा सा प्लास्टिक बैग आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो, ठीक है, जिसमें आप कूड़ा डाल सकते हो और आप 2 दिन में या 1 दिन बाद. तो अगेन इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अबाउट जो भी चेंज है ना कभी भी वो आसान नहीं होगा. आपको हमेशा एक एफर्ट करना पड़ेगा. वेदर कुछ भी हो, वो आपका पर्सनल ग्रोथ है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है, नथिंग इन लाइक एज वी सेड बिफोर ऑल्सो आसान कुछ नहीं होगा. यू हैव टू वर्क hard for it, and also you need to think of it कि आप किसके बारे में सोच रहे हो. क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि मैंने तो और 20 या 30 साल जीना है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट जब आप एज अ पेरेंट सोचते हो या जब आप एज अ एजुकेशनिस्ट और एज अ टीचर सोचते हो, देन यू नीड टू थिंक अबाउट दोज चिल्ड्रन ऑल्सो, that they are going to be in this world even after I am gone. Will the world be livable for them? Will they get to see that open playgrounds? Like if you remember when we were little, बारिश होती थी तो we used to drink that water. We would open our mouths and we will just enjoy that rain falling and we'll just drink that water. But can we let our children do that? एक बड़ा सा प्लेग्राउंड होता था और कुछ पता है ऐसे पार्क्स नहीं होते थे. उसका जो जॉय है हमारे इन बच्चों को मिल ही नहीं रहा है. हम दे ही नहीं सकते क्योंकि it has become so dirty. और अब इसको अगेन मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ कि ठीक है, अब इसको सेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए. ठीक है, गो एंड टेक एडमिशन अपने बच्चे को जहाँ पर उसको खेलना है और he'll get a good ground, टीचर्स, कोचेस, एवरीथिंग. लेकिन अगेन मैं उस अपनी पुरानी लाइफ में जाऊँ जहाँ पे कोई टीचर कोचेस नहीं होते थे, सिर्फ एक बड़ा सा प्लेग्राउंड होता था और 4 दोस्त इकट्ठे करने होते थे हमें और खेलने के लिए. ये सेंट्रलाइजेशन और एक वो वाली फ्रीडम, दोनों में एक मैं फर्क समझ सकता हूँ. या फिर आने वाले बच्चे इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे. ये शायद हमें ही हर्ट हो रहा है, हमारी एज को ही हर्ट हो रहा है. आने वाले बच्चे इसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर ही रहे क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं खेलने के लिए, तो उनको वहीं पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही जाना पड़ेगा, है ना. मैम एक और जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में देखता हूँ, मेरे को साई-फाई मूवीज काफी अच्छी लगती है. उनका फ्यूचर बहुत वो आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं. हम इंडियंस, मैं अगर इंडिया बॉलीवुड की मूवी देखूँ या उनकी देखूँ तो हम
कहीं पर मैच नहीं करते उनकी थॉट प्रोसेस से। अब उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है और बहुत अमेजिंग चीज़ है। वो कभी किसी प्लैनेट पे ले जाते हैं, कभी वो 300 साल बाद किसी को उठा देते हैं। क्या ह्यूमन कॉन्शियस, वो जो साइंस फिक्शन मूवीज हैं, क्या आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये इंटेलिजेंस आ रही है, ये हमें वो वाला दिन दिखा सकती है जो आज हम मूवीज में देख रहे हैं। क्योंकि नोबडी थॉट कि हम कभी किसी के साथ फोन पे बात कर पाएंगे जो कनाडा में होगा या फोन में होगा। वो उसके लिए एक एल्यूजन होएगा, क्योंकि मैंने वहां से टेलीपैथी के थ्रू बात किया तो वो एल्यूजन होएगा। लेकिन उसके हाथ में फोन दे दिया, देन ही सेड कि ओके अब बात हो रही है ना। टेलीपैथी इज अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट इन साइंस, जहाँ पर यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग बट यू कैन सेंड अ मैसेज एंड ऑल। एंड बट यहाँ पर हमें वी हैव phone and this thing देखना। ये वाला फ्लिकर कर रहा है। ओके, तो ये साइंस फिक्शन में स्टेम का क्या रोल रहेगा, और क्या हम कभी ऐसी जो वर्ल्ड जो हम आजकल मूवीज में देख पा रहे हैं, क्या हम एक्चुअल में कोई वर्ल्ड होगा ऐसा देख पाएंगे, बना पाएंगे? I think anything is possible. You know, what we feel is just imagination today is very much possible. एंड आपने एक और पॉइंट बोला था कि हाउ बॉलीवुड इज नॉट एबल टू मैच अप विद लेट्स से हॉलीवुड का मूवी स्टैंडर्ड्स। आई थिंक दैट्स अगेन इफ वी गो बैक, सो वेयर इज द डिफरेंस इन हाउ क्रिएटिव वी आर। द डिफरेंस इज हाउ इट्स द इमेजिनेशन ओनली विच इज डिफरेंट, राइट? आई मीन आपने एक स्टोरी लिखी, पर वो स्टोरी कितनी इमेजिनेटिव या क्रिएटिव है, that depends on how creative you can be, right? In our traditional system, we have kind of focused a lot on rote learning and memorization, जहाँ पे हमने creativity कहीं ना कहीं हमारी kill हो गई है. So you know, if you want, and again because research पे भी focus नहीं है, there if you look at anything, for example an action sequence, that action sequence is shot over a long time with all kind of technology, people being involved. You know, there would be someone managing the entire set and managing get the fly, how it will happen. You know, so there's a lot of technology involved in shooting a movie or a scene like that. You know, but do we have उस तरह का technology यहाँ पे? Why do we need to, even any big budget movie which is doing that, they need to have artists of these special skills from abroad. वो स्किल आपको यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी और हमारा इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है उस पर थोड़ा फोकस कम हुआ है. सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट. हाँ, बस आइडिया वो उसकी उनका तो थॉट ही बड़ा डिफरेंट होता है. हाँ. मतलब वो आइडिया कंसेप्ट सुन ले तो राइट, दैट अनइमेजिनेबल, राइट? आई मीन हम कितना क्रिएटिव अपने आप को बोलते हैं और हम कितना डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकते हैं. ओके, या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मैम. Thank you. The pleasure is mine.